Avogadros number एक हमारा कन्वेंशनल सा बिहेवियर है. देन व्हेनेवर वी गो टू बाजार हम डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट यूनिट्स से खरीदते हैं, लाइक डजन्स, kilograms, a ream of paper and a unit. What are various numbers which specify these units? Like when you buy dozen eggs, there are 12 eggs, and when you put a ream of paper into your photocopier, there are 500 sheets of paper in a ream. Then pair is always equals to 2. So as the Avogadros number equals to 6.02 into 10 raised to power 23 particles. Avogadros number, ये क्वांटिटी तो जहन में आती है, बट व्हाट टाइप ऑफ यूनिट इज दिस? वेयर डज इट कम फ्रॉम? In 1811, a scientist named Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, such a big name, but we will stick to the more familiar version, which is Avogadro. Avogadro was the scientist who proposed the idea that fixed volume of different gases at standard temperature and pressure contain equal number of particles in it. अगर मैं Avogadro number को define करूं, the definition will be Avogadro number is the number of atoms, molecules and ions in 1 gram atom of an element, 1 gram molecule of a compound and 1 gram ion of a substance. देखिए different moles की बात कर रहे हैं, compound के elements हैं, molecules हैं या ions हैं, इनके moles में number of particles की बात की जा रही है, which we call as Avogadro number. Avogadro number, अगर हम mole को एक pile consider करें, and I want to know that how many particles are there in a pile of mole, then I will say there are Avogadro's number or 6.02 into 10 raised to power 23 particles in 1 mole of any substance. Avogadro numbers, sometimes called as Avogadro's constant, represented as an A, it's a symbol, and it's always equals to 6.02 into 10 raised to power 23 per mole, मतलब number of particles per mole. To understand the Avogadro's number, let us consider some quantities. Let, for example, consider the elements. Hydrogen is an element. Hydrogen atom का mass होता है 1.008 grams, and if I represent this mass in grams, it means 1 mole of hydrogen. And हम बात कर रहे हैं Avogadro number की, which specifies the number of particles within 1 mole. Hydrogen के 1 mole में number of particles will be Avogadro's number 6.02 into 10 raised to power 23. इसी तरीके से एक और element की example लेते हैं. The atom of uranium, actinide है, F block element, and slightly it is famous for its radioactive property. It has 238. इसका जो 1 mole है, उसमें जो mass है, that is 238 grams. It is too much. अगर हम hydrogen से comparison करें, that mass is too much. 1 mole of uranium is 238, whereas 1 mole of hydrogen is equals to 1.008 grams. खैर, uranium का 1 mole जो है, उसमें भी number of particles की बात करें, तो that will be 6.02 into 10 raised to power 23. So as the sodium 23 grams, इसका 1 mole 23 grams का होता है, और इसमें भी इसके 1 mole में भी number of particles will be the same. पता क्या चला हमें? That different elements के जो atoms हैं, उनके हमने moles देखे, हाइड्रोजन का, यूरेनियम का and सोडियम का. इन सारे elements के masses different हैं, but इनके 1 mole में number of particles same है. That is why we say Avogadro's constant. That specifies the number of particles in 1 mole quantity. Certain species या certain, जिस तरह की हमने definition में बात की थी, तो moles हैं हमारे पास molecules, जो certain substances जिनके molecules exist करते हैं, उनके भी 1 mole में अगर हम define करना चाहें, that 1 mole of glucose, that how many molecules are there, how many molecules of glucose are there in 1 mole of glucose. So that will remain the same, 6.02 into 10 raised to power 23. The difference over here is just that we are now discussing the molecules, not the elements, not the atoms. The free atoms को discuss नहीं कर रहे हैं, molecules की बात कर रहे हैं. Molecules of glucose हो, molecules of water और molecule of sucrose. इनका mass तो different है,
जो कि स्पेसिफाई करते हैं हम ग्राम्स में, which is equals to 1 mole. But here the important thing is that we are trying to determine the number of particles in 1 mole of different molecules, like 1 mole of glucose, 1 mole of water and 1 mole of sucrose. इनका mass different है but number of particles are same. So as the ionic species, you are very much familiar with the ionic species. Acid base equilibria में certain ionic species हैं जो कि independently exist करती हैं, and I want to know that in my battery or in certain electrolyte how कितने different quantities हैं free ions की. तो सल्फेट आयन की बात करते हैं. सल्फेट आयन का 1 mole is equal होता है 96 grams के. But if I want to know that how many particles of sulfate ion are there in 1 mole, that will remain the same Avogadros number. इसी तरह से नाइट्रेट आयन 62 ग्राम्स का है, इसका 1 मोल, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे. सर्टेन फॉर्मूलाज देखते हैं कि जिनमें हम डिफाइन कर सकें द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ देयर masses विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. लाइक आई सेड कि मोल जो कि सब्सटेंस का यूनिट है, उसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमिन करना चाहते हैं. सो हियर वी हैव अ फॉर्मूला that number of molecules of a compound is equals to mass of the compound into Na, Avogadros number, divided by its molecular mass. This part here, mass of the compound over molecular mass. Agar, if you recall the mole formula, this is actually the number of moles of certain compound. हमारे पास जो given mass है उसको हम divide कर रहे हैं molecular mass से, and we get the moles of certain substance. और उसको हम अगर Avogadro number से multiply कर दें, then we will know that in a given mass of certain substance, how many number of particles are there. इसी तरीके से number of atoms of an element और ionic species किसी भी चीज में, क्योंकि हमने differentiate किया molecules, atom free atoms और ionic species जो कि किसी एक substance में exist कर सकती हैं. तो उनकी क्वांटिटीज को डिटरमिन करने के लिए वी विल फॉलो दिस फॉर्मूला.